बेसिकली जो हम लोगों का ब्रेन है वो रिहर्सल और रिपीटेशन से लर्न करता है। तो जितनी चीज़ों को हम बार बार बोल के रिहर्सल करते रहेंगे, रिपीटेशन करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली इट विल गेन, आवर ब्रेन विल लर्न फ्रॉम दैट थिंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्री के व्लॉग्स। आज हुआ है डे 6 ऑफ अबंडेंस का एंड टुडे वी आर गोना राइट अ लॉट एंड अ लॉट मोर। तो आज आपका लिखने का टास्क बहुत ज़्यादा रहेगा। लिखने के लिए ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि जो आपका रिटर्न टास्क है वो ऑलमोस्ट 1 आवर का चला जाएगा। बेसिकली उस 1 घंटे की राइटिंग सेशन में मैं आपको 8 स्टेटमेंट दूंगी, 8 स्टेटमेंट आपको दी जाएगी। जो सारी स्टेटमेंट आपने 10-10 बार लिखनी है और फिर उसको बोलना है। बोलने के बाद ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, ऑडियो या वीडियो वॉट एवर यू फील लाइक। एंड दिस इज लाइक अ लॉन्गेस्ट टास्क। आपके 21 दिन अबंडेंस कोर्स में सबसे ज़्यादा लंबा टास्क आज का है। सो डू स्पेयर सम टाइम फॉर टुडेज टास्क। एंड जो आज की 8 फ्रेजेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। और अब मैं सारी 8 स्टेटमेंट को वर्ड टू वर्ड रीड आउट करती हूँ आप लोगों के लिए, और जब आप लिखने लगेंगे तब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी उन सारी स्टेटमेंट को देख सकते हैं। Statement 1. I, with my first name and last name, which is Priyanka Taneja, I, Priyanka Taneja, am starting a new relationship with money today. Second statement is, money is good, useful and necessary for my prosperity and growth, for my satisfaction and abundance. Third statement, money brings positive things to my life. The success that I experience in my life brings me financial reward and happiness for me and my loved ones. Fourth statement is, I deserve to flourish and have a lot of money. Fifth statement is, money is my friend and the value of my investment in it is growing every day. Sixth statement says, success and money accompany me here and now. Seventh statement, I ask my parents, grandparents and ancestors to the very origins of the clan who had difficulties due to lack of money to bless me as I choose to live differently. Now the last statement, 8th statement is, and I ask my parents, grandparents and ancestors to the very origins of the family who lived in abundance and prosperity to inspire me on this journey. So this is all about 8 sentences we have for today's task. You're gonna write all the 8 sentences on a paper and you're gonna read it out again and again, and you can record your audio, or if you want you can record your video also while reading these sentences. Also, while reading these statement with soul, expression and sense of attachment, that is sincerely and on audio or video whatever you feel like. अब आते हैं आज की फ्रेज पे, एवरीथिंग आई डिजायर इज विद इन मी। तो आज की फ्रेज को आपने एक पेपर पे लिख के आते जाते बार बार दिन में जितनी बार पॉसिबल होता है उसको पढ़ते रहना है। और आज का जो मंत्रा है विच इज राम राम राम, 3 टाइम्स राम राम राम। अब मैं इस ऑडियो के बाद आज का जो मेडिटेशन का हमारा ऑडियो है उसको अटैच कर दूंगी। अब आप रिलैक्स होके एक कंफर्टेबल पोजीशन में मेडिटेट कीजिए। Welcome to day 6. We are born with everything we need for a life of fulfillment and success. But often we measure our love, joy, health, vitality, and other positive qualities by comparing ourselves to someone or something else. Perhaps thinking thoughts like, I have a loving relationship, but not as loving as my friends. Or,
I live in a nice house, but not as big as my brother's. Or, I have a good job, but I don't make as much money as my colleague. Such comparisons stem from object referral, looking outside oneself for validation. But an abundant life is not about external comparisons. Instead, a life of fulfillment comes from within, through the knowledge that you were created with everything you need to be happy and successful, and can access those seeds of abundance at any time. Currently, all over the world, many people are experiencing difficult times. When we experience such setbacks, we sometimes feel like we'll never achieve success. Yet, in every perceived failure or setback is the seed of success. In every situation, we have new opportunities to find creative solutions for our problems, redefine our priorities, and explore other options. We begin to view our challenges more positively once we realize that we possess the power to focus our attention on new possibilities. And possibilities for abundance are endless. There are no limits to what we can have. Take the time to look at each situation that challenges you and find those seeds of success that will attract greater abundance into your life. As we prepare to go into silence, let's consider the abundant banquet of life that has been spread before us in all its splendor, and spend a moment focusing on this centering thought. Everything I desire is within me. Everything I desire is within me. Now let's begin. Please find a comfortable position, placing your hands lightly in your lap and closing your eyes. In this moment, go within to that place of inner quiet where we experience our connection to the higher self. Let go of all thoughts and begin to observe the inflow and outflow of your breath. With each inhalation and exhalation, allow yourself to become more relaxed, more comfortable, more at peace. Now, gently introduce the mantra, repeating it mentally and allowing it to flow with effortless ease. Ram, Ram, Ram. Everything I desire is within me. Ram, Ram, Ram. Just mentally. Ram, Ram.
Whenever you find yourself distracted by thoughts, sensations in your body, or noises in the environment, simply return your attention to mentally repeating the mantra Ram, Ram, Ram. Please continue with your meditation. I'll mind the time, and at the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate it's time to release the mantra. Ram, Ram, Ram.
It's time to release the mantra. Please bring your awareness back into your body. Take a moment to rest, inhaling and exhaling slowly and deeply. When you feel ready, gently open your eyes. As you continue with your day, take with you this sense of stillness and remember today's centering thought. Everything I desire is within me. Everything I desire is within me. Everything I desire is within me. Namaste. मेरा टास्क तो कंप्लीट हो गया आज का एंड मेडिटेशन भी कर ली और फ्रेज को बार बार दिन में पढ़ भी लिया। अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूँगी कि आप लोगों की जर्नी अबंडेंस के साथ कैसी चल रही है, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लग रही है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो में कभी भी कोई चीज़ या दोबारा आप सुनना चाहते हैं या डिफ़िकल्टी आ रही है किसी भी फेज़ में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जो अबंडेंस का हमारा 21 डेज की जर्नी चल रही है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके जो ईच एंड वर्ड मैं बोलूँगी वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके रीड आउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो ऑल्सो। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।